Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और शेयर बाजार के प्रख्यात विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi addresses a webinar on developing tourism in mission mode, insists on developing 50 tourist destinations for global tourists visiting India. Wheat crop in major growing states normal and without heat stress, says government. Over 1 crore farmers have benefited from ongoing paddy procurement for Kharif marketing season 2022-23, and benchmark indices end strongly in green, gaining more than 1.5%. Sensex closes above 59,800 mark. Nifty settles near 17,600 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार में पर्यटन का विकास अभियान के तहत विषय पर चर्चा करते हुए दुनिया भर के पर्यटकों को भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित करने हेतु देश में 50 वैश्विक स्तर के पर्यटन केंद्र विकसित करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा, गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में गर्मी बढ़ने का फसल पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर, मौसम की स्थिति रहेगी सामान्य। खरीफ विपणन सीजन 2022 के दौरान धान खरीद योजना से 1 करोड़ से अधिक देश भर में हुए लाभान्वित। किसान और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली से प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 17,600 के नजदीक आ गया। In our top story, Prime Minister Narendra Modi today stressed on the need to think out of the box and do long-term planning to give a new height to the tourism sector in the country. Mr. Modi was addressing a post-budget webinar on developing tourism in mission mode. He highlighted the huge scope of tourism in India and listed out coastal, beach, mangrove, Himalayan, adventure, wildlife, eco, heritage, spiritual, wedding destinations and sports tourism in this direction. He also gave the example of the Ramayan circuit, Buddha circuit, Krishna circuit, Northeast circuit, Gandhi circuit and pilgrimages of all saints, highlighting that tourism has always been a part of India's social and cultural civilization. Mr. Modi said if the country develops more facilities, it will increase tourist footfall. He also said tourists are attracted when there is an ease of travelling, and Kashi Vishwanath Dham in Varanasi and Kedarnath Dham are live models. Mr. Modi said around 80 lakh people used to visit the Kashi Vishwanath Dham in Varanasi in a year before it was rebuilt, but the tourist footfall crossed 7 crores last year after the renovation. The Prime Minister said civic amenities, digital connectivity, cleanliness and better infrastructure will be helpful for boosting tourism, adding that increased tourist footfall will encourage a huge potential for employment opportunities. Saying that villages are becoming centers of tourism in the country, Prime Minister remarked that remote villages are now coming up on the tourism map due to the improving infrastructure. He informed that the central government has started the Vibrant Village scheme for the villages situated along the border and emphasized the need to support businesses including homestays, small hotels and restaurants. Talking about the increasing number of foreign tourists in India, the Prime Minister underlined the need to profile such tourists and create a special strategy to attract them to the country. He insisted on developing 50 such tourist destinations that every tourist from around the globe is bound to visit on his trip to India. Mr. Modi also highlighted the basic challenge of the tourism sector and pointed out the lack of professional tourist guides. Prime Minister stressed on promoting school and college trips to the Northeast so that more people become aware and start developing infrastructure and facilities for the tourists. And on this, we're joined by market expert Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you in Market Mantra. Thank you, Arjun.
Puneet, what's your take on the 50 tourism destinations in India and pilgrimages being a start point in this focus of the Prime Minister? So, Arjun, honestly, I think Prime Minister has drawn up a very comprehensive plan for developing India as a tourist destination for international tourists. In fact, we all know that in fact, tourism and travel has really picked up very well across India. We are all aware that hotels and airlines and all destinations are facing a lot of growth in terms of tourist spending. But I think what we need truly is that India develops as an international destination, and we have infrastructure and facilities of that quality. So while we have been aware of this, in fact, almost every leader has spoken about it, but the truth is that we have not developed this infrastructure so far. But hopefully going forward, blueprint in mind, I think we will see development of these destinations in mission mode. We need to develop these. And the example, of course, is Kashi Vishwadham, because we know that the tourist arrivals there multiplied many folds, almost 10 folds in post-development. So clearly, I think this is a very, very important avenue of growth for us, particularly because it also generates huge employment at local level. So I think it's extremely important. I can't even begin to emphasize the importance of this for the development of our economy, really. पुनीत जी, प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें अपने गांव में भी जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, गांव में जैसा जीवन होता है उसके प्रति वो कैसे आकर्षित हों और वहां जाकर वह गांव का जीवन देखें और वहां भी पर्यटन की दृष्टि से आएं, उस पर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम जब पर्यटन का विकास करें तो गांव पर भी वाइब्रेंट विलेज पर यानी थोड़ा सा ध्यान दें। किस रूप में ले रहे हैं इसे? देखिए, नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसको देखें तो अगर लोकल इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी चीज है अगर ऐसा हम कर सकते हैं। और आप और हम जो लोग जिन्होंने ट्रैवल किया है यूरोप में, आप देखते हैं वहां पर काफी टूरिस्ट वहां के लोकल विलेजेस में जाते हैं और वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो भी लोकल प्रोड्यूस है उसको हम खरीदते भी हैं, देखते भी हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ डेवलपिंग दैट इंटरेस्ट। और यदि गांव में और हमारे भारत में देखिए काफी डिफरेंट तरह के लैंडस्केप्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं जैसे बात करिए आपने मैनग्रोव्स हैं, कहीं कोरल रीफ्स हैं, तो बहुत और कुछ पूछना है, बहुत वैरायटी है पूछे जो डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम और अगर आने वाले समय में इसको हम अचीव कर सकें तो ये काफी यूजफुल रहेगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने कहा है कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है और इस फसल पर फिलहाल गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित एक समिति की बैठक के दौरान ये सर्वेक्षण सामने आया। ये बैठक हाल ही में करनाल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में आयोजित की गई थी। समिति ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में समय से पहले तथा समय पर गेहूं की बुआई के 75% क्षेत्र मार्च महीने में गर्मी से प्रभावित नहीं होंगे। समिति ने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों से मौसम के दबाव झेलने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर ली गई हैं। ऐसे में इन फसलों पर गर्मी का असर बहुत कम पड़ेगा। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मौसम विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, गेहूं उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के विशेषज्ञों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। पुरीत जी, यानी इसे एक हम अच्छा कह लें कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर माने कि जो अल नीनो प्रभाव कहा जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, उसका असर हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूं पर उसका असर नहीं पड़ने की संभावना है। तो मनोज जी, जो फिलहाल जो खरीफ क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट जो है, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत असर पड़ेगा। और सरकार जिस प्रकार से प्रोक्योरमेंट कर रही है और उनका ये एक एफर्ट है कि रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हो जिससे किसानों के हाथ में पैसा पहुंचे और रूरल इकोनॉमी में ज्यादा पैसा रहे, क्योंकि जो एल नीनो इफेक्ट और बहुत ज्यादा गर्मी की हम असर की बात कर रहे हैं वो आने वाले जो सीजन है फसल का उस पर असर डाल सकता है।
और हम जानते हैं ये बात कि रबी क्रॉप जो है उसको खतरा हो सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सही है कि अभी कोई बहुत असर नहीं है, हार्वेस्टिंग बहुत नॉर्मल है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रोक्योरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, जिससे हमारे जो खाद्यान्न हैं, जो हमारे भंडार हैं, वो पूरे मजबूत रहें, ताकि आने वाले टाइम में कोई चैलेंज ना हो। और अगला सीजन जो है रबी क्रॉप जो है उसमें डेफिनेटली हमें काफी कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां एल नीनो का या कम बारिश जो की हम बात कर रहे हैं, बहुत जी बात कर रहे हैं, वहां उसका आपने पुरी जी खरीफ की बात की और खरीदारी की बात की, तो ताजा आंकड़े जो आए हैं हम उस पर श्रोताओं को अवगत कराना चाहेंगे। देश में खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए जारी धान खरीद से 1 करोड़ से अधिक किसान अब तक लाभान्वित हुए हैं। लगभग 7 करोड़ 13 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी इस महीने की पहली तारीख तक हो चुकी है। 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित कर दी गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि निर्बाध खरीदारी के सभी प्रबंध किए गए हैं। धान खरीद की एवज में चावल की सुपुर्दगी भी चल रही है। मंत्रालय ने कहा है कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेंट्रल पूल में चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। मौजूदा सीजन में खरीफ फसल के लिए लगभग 7 करोड़ 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी होने का अनुमान है। आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर। Puneet, just your views on the paddy procurement and the direct transfer of funds into the farmer's account. How would you view this particular development for the benefit of the farmer? So, Arjun, we all know that DBT combined with procurement at MSP has been one of the driving reasons for prosperity in rural India. In fact, earlier also there used to be procurement by government agencies, but we all know that there used to be a lot of leakage of money in that, and farmers did not get the right price. Sometimes they had to sell at distressed prices while government was buying at MSP. I think all that is now in the past. What we have seen is a very, very effective mechanism where farmers, they sell their produce and they get the money directly in their bank accounts. So it has been phenomenal. So if you really ask me, the impact of this 7.14 crore tons of procurement of wheat is phenomenal. I think it's going to drive rural spending and rural consumption and future growth in agriculture quite effectively in the coming days. पुनीत जी, इसे हम माने कि प्रधानमंत्री ने जो एक आह्वान आरंभिक दौर में किया था कि हर आदमी का एक खाता हो अपना बैंक में, एक मोबाइल हो, और इस तरह की योजनाओं का सीधा लाभ उसी को पहुंचे जो उसका लाभार्थी है, वह अब साकार होता दिख रहा जमीन पर हमें। बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं मानता हूं कि अभी भी उतना हम एप्रिशिएट नहीं करते जितना बड़ा रिफॉर्म ये है। बहुत मुश्किल था इतने बड़े पैमाने पर 100 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाना और गांव-गांव तक पहुंचाना। 6 लाख से ज्यादा गांव है हमारे देश में, तो बहुत मुश्किल था इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मानता हूं कि इसका पूरा इसके प्रति हम अभी उतना सजग नहीं है कि कितनी बड़ी उपलब्धि ये है, पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी जो अचीवमेंट है, यूपीआई की बात करें, वो सब इसी से जुड़ी हुई है जी। जो जनधन अकाउंट, मोबाइल और आधार का जो मेलजोल से जो इकोसिस्टम बना, ये उसी का ही एक बहुत बड़ा एक रूप है। यानी जाम को हम नकारात्मक रूप से कहा करते हैं, सुना करते हैं, लेकिन ये जाम JAM एक बुनियादी परिवर्तन करने में, देश की अर्थव्यवस्था में सहायक सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार लिवाली की गई और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 17,600 के नजदीक आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिले, जिसका अनुकूल असर निवेशकों पर दिखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 900 अंक यानी 1.53% बढ़कर 59,809 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 272 अंक यानी 1.57% की बढ़त के साथ 17,594 दर्ज हुआ।
सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.56% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.68% लाभ में रहा। Domestic share markets today closed with strong gains of more than 1.5%. Sensex ended above 59,800 mark. Nifty settled near the 17,600 level. Both the benchmark stock indices rose amid positive cues from the global share markets. Sensex surged by 900 points, 1.53%, to end at 59,809. Nifty also added 272 points, 1.57%, to close at 17,594. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.58% and the small-cap index added 0.68%. In the Sensex Pack, 26 companies posted gains, while the remaining 4 witnessed losses. SBI Bank was the top gainer, rising 5.1%, followed by Bharti Airtel, adding 3.3%. Reliance surged 2.5%, and ITC ended 2.4% up. On the other hand, Tech Mahindra slipped 2.2% and Ultra Tech Cement lost 1%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors posted gains. The services sector gained 3.1%. Utilities and financial services both rose 1.8% each. Commodities index added 1.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,182 companies gained, while 1,333 companies fell. Shares of 124 companies remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 63 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 97 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में 0.27% घटकर 104.74 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में पिछले 3 दिनों का यदि हम हाल देखें तो एक दिन बिकवाली, दूसरे दिन लिवाली, फिर उसके बाद यानी जोरदार लिवाली, फिर जोरदार बिकवाली, कुल मिलाकर ये जो ऊपर नीचे का खेल एक एक दिन के अंतर पर चल रहा, और आज की जो जबरदस्त लिवाली है उसके पीछे कारक क्या सब नजर आ रहे हैं आपको? मनोज जी, देखिए, पिछले करीब 1 महीने से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रुप के शेयर्स को लेकर के या उसकी जो वित्तीय स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको लेकर बाजार में कुछ अनसर्टेनिटी थी, कुछ चिंताएं थी, और बाजार में हमने देखा कि उस दौरान काफी उतार चढ़ाव रहा। और मुझे लगता है कि आज का जो दिन है वो एक डिसाइसिव चेंज ऑफ डायरेक्शन था कि एक तो काफी बड़ी एफआईआई के द्वारा बाइंग हुई कल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रुप में, काफी उनके शेयर्स उन्होंने बेचे और उससे पैसा रेज किया। उससे बाजार को काफी एक तसल्ली हुई कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो विदेशी निवेशक हैं, जो एफआईआई हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भारत में वो बरकरार है। तो मुझे लगता है उसके रिएक्शन में एक तो बाजार में आज काफी पॉजिटिव डायरेक्शन रही। यदि आज हम बाइंग फिगर्स भी देखें तो आज भी एफआईआईज ने काफी बाइंग करी, और साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग थी, करीब 1400 करोड़ की डोमेस्टिक की बाइंग थी और एफआईआईज की भी बाइंग हुई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो एक महीने से जो कुछ अनसर्टेनिटी थी या कंफ्यूजन था मार्केट में, वो आज डिसाइसिवली उसमें फर्क पड़ा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और आने वाले समय में भी हालांकि उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्योंकि ये महीना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का होता है, तो थोड़ा बाजार में वॉलेटिलिटी रहती है, पर मुझे लगता है कि हम अब यहां से काफी बेहतर मार्केट सेंटिमेंट देखेंगे। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है बाजार में वो भी काफी नीचे है, यानी वो भी एक हमें बता रहा है कि बाजार में चिंताएं अब काफी कम हो रही है। Puneet, the DIIs were the net buyers to the tune of 2,090 crore rupees today, whereas the FIIs were the net buyers to the tune of 246 crores only in the equity market. There is news coming in about $2 billion buy-in into our market from the US, GQG. Is that true? That is true. So yesterday, this fund, which is based in USA, in fact being run by an Indian, the CEO is an Indian, very well-known fund manager. So, and managing over $100 billion in assets. So they have invested $2 billion, nearly $2 billion in this industrial group that we're talking about, which was rumored to be facing financial difficulties. I think that decisive investment made all the difference and gave enormous confidence to investors in India that the India story is very strong. FIIs and foreign investors are very keen on investing in India. I think that gave a lot of confidence.
And it really turned the sentiment today. And hopefully, FIIs have turned buyers today. They will continue to be buyers now in India. So my take is that we days in the markets in the months ahead. What about next week, Puneet? Today was the last day of the trading week. Could we expect continued buying into our markets next week also? So, Arjun, my belief is that we will see some rebound and we'll see some market move going forward. See, what happened was that before yesterday, in fact, almost 7 to 8 days, the markets kept falling in one single direction. And there was a lot of oversold positions in the market. They got covered yesterday and today. And going forward, I think if FIIs continue to be buyers, we will see markets move higher. March is usually somewhat slow because of closing of financial year and not large financial commitments can be made. But I think overall sentiment is positive. And if this continues to be okay, I mean the markets are stable, then probably next few months could become very positive for the stock markets. Although there are challenges in the economy. We know that GDP growth is slowing down a little bit. So that is a kind of a threat or challenge to the market. But I think overall right now the markets are okay, stable. पुनीत जी, हम आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे रुपए की स्थिति पर। आज ये 63 पैसे मजबूत हुआ है, 81 रुपए 97 पैसे के स्तर पर पहुंचा है। किन अर्थों में ले रहे रुपए की स्थिति को और यह क्या दर्शा रहा? मनोज जी, देखिए, पहला तो कारण ये रहा आज कि जो जैसे अर्जुन ने बताया कि $2 बिलियन का बाइंग कल हुई है FIIs के द्वारा भारतीय बाजारों में। तो एक बहुत बड़ा पैसा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब 15 से 16 हजार करोड़ रुपया नेट इनफ्लो FIIs का। और जब भी वो बाइंग करते हैं तो वो पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर करना होता है, बिकॉज T+1 सेटलमेंट है, तो वो पैसा इमीडिएट आता है। और इसलिए वो $2 बिलियन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उसका फर्क पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट में हमने वहां बाइंग देखी। दूसरा जो हमारे पास ट्रेड डेटा आ रहा है, वो भी ये बता रहा है कि अब जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा था हमारा काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे, उसमें कमी आई है। तो मुझे लगता है वहां भी हम बेहतर कंडीशंस देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर रुपया जो है वो कभी भी स्टेबल, एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें 81 और 83 के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है अभी वो। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर तेजी दिखी है। अमेरिका में केंद्रीय बैंक की ओर से नीतिगत सख्ती बरतने में नपा तुला रुख अपनाने संबंधी खबरों का बाजार पर आज सकारात्मक असर पड़ा। उसके अलावा चीन से भी आई खबरों ने आर्थिक बढ़ोतरी की संभावनाओं में थोड़ी मजबूती जताई। इन सब खबरों से एशियाई निवेशकों को निवेश करने की धारणा उनकी मजबूत हुई। एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो जापान के निक्केई 225 सूचकांक में आज 1.5% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हेंग सेंग 0.7% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर चलन के विपरीत बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.7% की वृद्धि थी और जर्मनी का डेक्स 0.9% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Puneet, what's this economic recovery in China, briefly? So China data that we've seen, first of all, of course, after COVID zero policy was scrapped and China reopened, we saw the economic growth, it jumped naturally because the base was small and there was no revenge, you can say, buying by consumers. So they kind of grew rapidly, but now they have settled down. And of course, China is also following a policy of easy monetary policy. They're no longer tightening like the rest of the world. So they're trying to support consumption within China. And that has seen some traction from other quarters also. We have just got data from PMI, the Purchasing Managers Index, right, manufacturing and services. And that has also been very positive, in fact. And almost several years high level of PMI, right, which indicates that there is growth. Of course, I must caution here that there has been low base. Last year was, of course, not very good for global economies, particularly China. So we will see large numbers in the current year. But overall, I would say the growth is moderating, but growth will be modest and okay.
going forward. Moving on to the U.S. stock market, Dow Jones Industrial Average rose 1.5%, S&P 500 gained 0.8%, and the Nasdaq Composite Index added 0.7%. Very briefly, what is the story on interest rates from the Fed Reserve? Are they putting a pause to it? And bond yields are still quite high. Equity markets have also gone up in the U.S. market. So this is a great mystery. We don't know what the US Fed is going to do, because you have all kinds of voices. No, there are people who are predicting recession and they're saying they should pause immediately. There's some members of Fed have said they will raise rates. So I think that is a deliberate attempt by US Fed to keep markets guessing. My own guess is they will not raise rates very significantly from current levels. They'll probably keep those rates higher for longer, and rather than raise rates further, because there is a clear risk of recession. So my guess is that we're going to be in this range for quite some time. So if the interest rates are not certain, predictable, then the derivatives market actually works. In fact, they are also introducing the same type of securities in our markets now. So clearly, markets are trying to guess, and therefore the market volumes become high and they become volatile, because the market reacts to every bit of news. So clearly, interest rate markets are also in a tizzy. They're not able to make up their mind. There are no clear indications, but I'm sure that by end of March, we'll have a clear path to where interest rates are headed. And the dollar index is inching up. It's 104.72. Do you see that trend continuing? So honestly, Arjun, I think dollar is rebounding from the lows that we saw, about 101 recently. But there is no strength in dollar rally. We will see dollar index come down again. This is just a kind of a eco boom, no? It has kind of echoed from or bounced back from the lows. But my own sense is that dollar rally is past behind us, and dollar will head lower in the medium term. Let's have a look at the oil market now. Oil prices held steady today, poised to register a weekly gain. This comes amid renewed optimism on China's demand recovery, overrode recession worries over growing U.S. crude inventories and tightening monetary policy in Europe. In intraday trade, Brent crude was trading at around $84.50 per barrel, while WTI crude price was at $78 per barrel. Puneet, to what extent are these international prices from Brent and WTI going to affect emerging economies which are trading with Russian crude at $60 a barrel? So fortunately for India, while international prices are very high, we have been getting discounted crude, and government has kind of indicated that we are getting crude at lower than $60 a barrel, which is very good for our economy. So while the headline numbers may be very high, I think for some of the emerging economies, prices have been very reasonable in recent past. So we are almost buying in 1/4 to 1/3 of our needs from Russia? Yeah, more than 35%. In fact, the latest data it says 1/3 of our oil is now coming from Russia, which is good for local consumers really. आइए चलें सराफा बाजार। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के मूल्यों में थोड़ी तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्देशीय कारोबार में 75 रुपए बढ़त के साथ 55,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 450 रुपए बढ़कर 64,485 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाएं तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत था, $1,853 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी मामूली बढ़त के साथ $20.20 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses post-budget webinar on developing tourism in mission mode. Insists on developing 50 tourist destinations for global tourists bound to visit on a trip to India. Wheat crop in major growing states normal and without heat stress, says the government. Over 1 crore farmers benefited from the ongoing paddy procurement for Kharif marketing season 2022-23. And benchmark stock market indices end strongly in the green, gaining more than 1.5%. Sensex closes above 59,800 mark. Nifty settles near 17,600 level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.